give me a moment. I'm told Girija Vyas, chairperson of the National Commission for Women, I'm being told by my producers, is through with us at this time. Ms. Vyas, Nirmala Venkatesh leveling very serious allegations. She's saying you killed the Arushi murder probe. Why, ma'am? Why? गिरिजा जी, can you hear me? हेलो गिरिजा जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मुझे नहीं आ रही भैया, बहुत धीमे से आ रही है। गिरिजा जी, हमारे साथ निर्मला वेंकटेश है, उनका हमने इंटरव्यू चलाया। वो कह रही हैं कि जब वो आरुषि तलवार के घर गई मर्डर प्रोब करने के लिए, देखने के लिए कि किन परिस्थितियों में आरुषि का मर्डर हुआ, आपने फोन करके बोला कि फौरन इस प्रोब को रद्द करो, वापस आओ। आपने ऐसा क्यों किया मैम? ऐसे कभी हो सकता है? और आपने पूछ भी लिया कि ऐसा क्यों किया? कैन आई डू दिस? आई कंस्टिट्यूट द कमिटी और मैं हमेशा लड़ती रहती हूँ इसके लिए। मैं क्या क्यों कहूंगी? व्हाई शुड आई? और यदि ऐसा था तो उसकी कॉन्शियस आज क्यों जागी है? उसी वक्त रिपोर्ट तो सबमिट हुई है कमीशन में। उस रिपोर्ट में उसी वक्त लिख देती कि आधी रिपोर्ट है। रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन द कमीशन और उसके बाद में क्योंकि केस सीबीआई में चला गया इसलिए हम लोगों ने उस पर वॉच रखा हुआ था, उस पर निगाह नहीं, पर कभी भी रिपोर्ट पूरी नहीं की गई। वो रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है, कभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की। ये तो आधी अधूरी रिपोर्ट है। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट नेहा दीक्षित जब आपके पास दिन में आई, आपने इस बात को माना कि हाँ मैंने ये फोन किया, लेकिन आप साथ के साथ ये कह रही हैं कि उन्होंने मेरी बात क्यों मानी। इसको आप जरा एक्सप्लेन कीजिए कि अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है, आप उसको फोन कर रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए, बाद में आप पलट के कहती हैं कि उन्होंने मेरी बात क्यों मानी, उनको मेरी बात ही नहीं माननी चाहिए थी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि मैंने कहा ही नहीं है, और यदि कहा होता तो वो रिपोर्ट में जरूर लिखती है। रिपोर्ट तो पूरी की पूरी हाँ उसमें आई है। आई नेवर, मैं महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मुझे इस नॉनसेंसिकल बातों का जवाब देने का कुछ वो नहीं है। आई डोंट वांट टू आंसर। आई एम कमिटेड टू माय वर्क, आई एम कमिटेड टू वुमेन्स कॉज एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी and a person like her, anybody's certificate like this. Okay? Just give me a moment. I want to play out your reaction. Ms. Vyas, earlier in the morning when you spoke to us, you had said that yes, I called up. However, why did they not file their report if at all? They're saying that I called up. Just listen to this and I'm coming back and I want to see how you've changed your reaction between the morning when we confronted you with this and later. Take a look at this, man. Why should I stop? Inquiry should be there. Can anybody believe that Girija Vyas can stop? I don't know. Phone calls, doesn't mean they stop it. Phone calls maybe for other reasons. They are doing some work. I don't know. I may call for some other meetings, some other things, so for this and that. It doesn't mean that I would have. They have given the full report. And if there was anything, they could have reported. Now, if their conscience is alive, then why not at that same time? The question, why not at that time? We just heard Ms. Girija Vyas say, I never made this call, Ms. Venkatesh. Now, it's really your word versus hers. And also, at this time, we know that phone records from that period can be accessed. Yeah. What do you have to say? You just heard as a chairperson, when she has called us back, it is our duty to go back. If we can discontinue it and just go back, we have to obey it, and we went like that. Even Sweetie Sood also told. Then one more thing I was telling about the Nitari case. Nitari case, when I have summoned Piyush Maurya and all, the SP and in charge investigating officer thrice, and the other police officers also. Then what she said, when we submitted the reports, everything is over, and when the case has come out, and repeatedly I was going on calling him and asking him about the case and all, and she never bothered also about the case. When it has come out, the case has come out, then she asked me, पीयूष मौर्य का नाम आप मीडिया के सामने भी नहीं बोलना और रिपोर्ट में भी नहीं लिखना है. You're saying she then done this? I said nothing doing. Thrice I have summoned him, and when he is an investigating officer and we have ordered him to probe into the case, and also I have given him clues also. I have given him clues also that to arrest one women, एक चाय दुकान वाली को उसको arrest करो और उसके साथ हमको बहुत information आएगा. And when I went twice, I could make, but the chairperson, that Girija asked us to not to give out Piyush Maurya's name anywhere. Okay, let me introduce into the discourse at this time. When he is an investigating officer, he is responsible for everything. And why they have not arrested the culprits?
That time only when 5 girls were missing. Okay, you made your point. I have taken up the case. Okay, you that made your time. point. I want to bring in. I'm coming back to you. I'm going to come back to you.